Irfan Ashraf. A bit about the moderator, Syed Irfan Ashraf. He holds a PhD in mass communication and is currently an assistant professor at the University of Peshawar. Over you to Irfan Ashraf, sir. We welcome you all, friends, and thanks to the organizers who arranged such a nice event here. Today we will be talking about safeguarding religious freedoms in Jinnah's Pakistan. My panelists are very expert people, so I would not take too much of my time, but let me say that when I was looking into the main topic, safeguarding religious freedoms in Jinnah's Pakistan, so I was thinking that whether do we have like religious freedom, should we talk first about religious freedoms and then look towards safeguarding? But I understand that such things could be very complicated in a country like Pakistan, where you can talk about so many different things, but not about religion particularly. But today, we look into both these aspects, not just about religious freedoms, though we may not write it here, but we will talk about it. At the same time, we'll be looking into that, how these religious freedoms are being safeguarded in Jinnah's Pakistan, where the vision which is associated with Jinnah is very much clear. So I'm very lucky, we all are lucky that we have historian among us, we have like practitioners, we have like ex-director with us. So let me introduce them first, and then before putting the questions to them, and probably by around 40 minutes, we will discuss this topic. And later on, for 15 minutes, I will come to you. So if you have any question, please write it down with you, and we'll give you opportunity and chance to contribute to this session. So my panelists, they already have been introduced, but let me refresh your memory again. Yaqub Bangach Saab, he is a faculty in IT University Lahore. His book, A Princely Affairs, he's a historian by profession in that sense, and he's an academic. My question would be mostly about the history of safeguarding religious right. And then we have Dr. Farzana Bari Sahiba, ex-director, Qaid-e-Azam University, Gender Studies Department. Then we have Pritam Das Sahib. He's a representative of the Hindu community, and we'll ask about the issues of the minorities here. And then Maham Ali, she's an activist working in different fields, particularly the fundraising, so we'll also involve her. But my first question again, Dr. Yaqub Bangach Saab, when it comes to safeguarding religious freedoms in Jinnah's Pakistan, so what do we mean by Jinnah's Pakistan or Jinnah's vision and its relationship with safeguarding religious rights? I will request you to give us answer with respect to the history, in fact, in that way. Sure. Thank you so much, and happy to be in this distinguished panel. I think a very kind of a fun answer to that question is no one has a clue, and everyone has their own clues. And I think this is a very important point to emphasize, and I'll just take a minute or two to explain what I mean by this. First, we don't have a clue because Jinnah Saab never really explained what he thought in terms of what his vision for Pakistan was. All of us refer to one August 11 speech, which is of course very good and very interesting, but then he never really said anything on a constitutional framework after that, and then he died about 13 months afterwards. So we don't really know his clear thoughts on how this circle had to be squared. But with that, I should also say that Jinnah Saab often said that the people of Pakistan, and at that time the Constituent Assembly of Pakistan, should decide what kind of Pakistan it should be. So at some level, it's a very awkward question to ask, what is Jinnah's Pakistan? Because Jinnah Saab said, my Pakistan is what the people want. So the first point is that. The second point is that we forget that Jinnah was two different things. One was Jinnah was a politician. He was the president of the All India Muslim League that led to the creation of Pakistan. And then he was the Governor General of Pakistan. We often think that people don't change. People are the same no matter what they do. We have this odd kind of understanding
that people's opinions cannot develop, people's opinions cannot change, and if their role changes, even then the person needs to be the same. That's never the case anywhere in the world. You know, what I believed 10 years ago, I don't necessarily agree with it now because most things change. If my role changes today from an academic to a bureaucrat, then my views will also develop accordingly. So, and the distinction, therefore, I think it's very important to believe because up till the 15th of August, 1947, Jinnah was leading a political party which was composed solely of Muslims. People forget that the All India Muslim League, you had to be a Muslim to become a member. No non-Muslim could become a member. And then on the 15th of August, he takes oath as the Governor General of Pakistan, which at that time has 32% non-Muslims. Right? The exodus has just begun. No one knows what end percentage will be of non-Muslims. By the end of it, there were about 15% non-Muslims left in Pakistan. So Jinnah, the leader of the Muslim League, and Jinnah, the Governor General, are two different portfolios, are two different ways. And if you understand, if you look at the August 11th speech, that was given by our Governor General designate, Jinnah, not the political leader, Jinnah. And therefore, he was talking about citizenship on the basis of a common nationality rather than a religion. And he then became very consistent with that. And I'll add this because a lot of people don't know this or have forgotten this, that in December 1947, when there was the session of the All India Muslim League in Karachi, and it split into an Indian Union Muslim League and a Pakistan Muslim League, Jinnah refused to be its president. And he actually said that I cannot be, as Governor General, I cannot be head of a party that is communal, that is only has one religion in it. So we need to understand Jinnah within that context, that he had to work with a lot of different realities and he was responding to them. So to say that Jinnah's Pakistan is what we want, yes, we can latch on to one of his speeches and say, well, that's great, but we can also latch on to his other speeches. You know, again, people talk about August 11th, one can talk about 23rd August 1940, where he says that, you know, Muslims and Hindus are so different that, you know, their worlds are different. But I think the last word I'd say from where I began this is that one thing which Jinnah always said as Governor General also, even when he had the power, that the people of Pakistan should decide where this country should go. So I think 75 years down the line, it's an interesting academic question to understand what Jinnah wanted. Aisha Jalal has her view on it. Dr. Ishtiaq Ahmed has his view on it. There are several other views on it. But in that good academic argument, we should not forget that it is the people who are going to decide, not Jinnah. And Jinnah did repeatedly say that it's the people's responsibility. And unless the people of this country take a responsibility to figure out who they are and why they are where they are, this country is not going to go ahead. Thank you very much, but there are many other questions which are related to it, which I'm not asking right now. I'm going this side and then coming back to you, but it's important to know, if Jinnah believes in people's Pakistan, then I think it's a very unorthodox kind of politics, where leaders usually define the way, which way a state should go. So as a statesman, as somebody who is the founding father of Pakistan, can we afford to leave people in an uncertain way, because people want clarity on so many issues? If you just say once Pakistan become a country and a nation, so automatically things would be sorted out, as the current academics are bringing this into focus, that Jinnah himself was communal in so many ways, the way you said. So what could be the repercussions of this kind of approach for Pakistan, where today we don't know where we are standing? But that is, I'm coming to that. First, I would go to Dr. Farzana Bari Sahiba, that looking into what Dr. Yaqub said about the state of affairs in contemporary Pakistan, that when it comes to religious freedoms, Jinnah said something at one time and another thing. So looking into that, what are then the contemporary challenges? Because we don't find any threat. Which way we are going? Is it a secular country? Is it a theocratic state? Is it like authoritarian state? We have so many models before us. And each ruler coming here, somebody wants to impose khilafat, other like are giving us secular interpretation. So what is your input on that? That how do you feel that because of this plurality, what is the contemporary challenges emerging? What are the contemporary challenges? Thank you very much.
First of all, I see this distance bit too much between them and us. Thank you. Okay. Just in the interest of time, I personally feel, look, there is inherent tension, between this whole Jinnah's Pakistan and the notion of freedom, all kind of freedom in Pakistan, that includes religious freedom as well, because I think to understand, in order to answer your question, I think it's very important that we have to also look at the nature of the post-colonial state of Pakistan, which we inherited, And so the tension was always between, when you are trying to, at one level, your aspirations are to basically, to have all kind of freedoms, including religious freedom, but the state has a very centralized power, And state trying to then create, because this, the Pakistan which we have, it is a multinational, multicultural, multilinguistic, multi-ethnic, country. And we try to rule, I think, with this kind of very centralized power. And I think right from the beginning, the Pakistani state tried to homogenize people. They were obsessed with creating uniformity. They wanted to create this modern nation state by denying the kind of diversity which we have amongst people. And I think that we could see right from the very beginning, even, Jinnah Saab's own lifetime, the annexation, for example, in 1948 May, annexation of Balochistan took place. Aapki jo language rights, like Jinnah went to, at that time, Bangladesh is Pakistan at that time, and declared Urdu as an official language. And obviously at that time, East Pakistan, I think Bangla was the language which was majority of Pakistanis were speaking at that time. And I remember, I've read that when Jinnah went to Dhaka, in the University of Dhaka, the student even did not let him to finish his speech, that he was kept on interrupted by students. So basically, I feel that the challenges come from that, because soon after that, what we see back in 1949, the objective resolution, because we always refer to Jinnah's vision of Pakistan by quoting that speech, जो उन्होंने 11 अगस्त को की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि, like, you are free to go to your, mosque, temple or whatever, and state has no business, as far as religion is concerned. And I think that vision of Jinnah, I think if you ask me, I think if that was the vision of Jinnah, that was totally betrayed, right after his, like 1949, when objective resolution was introduced to the Constitution of Pakistan, initially as a preamble, and later on, that Ziaul Haq make it as a substantive part of the of Constitution. So I think if you see, so for me, the challenge is because are coming right from, you have to go and look into the sort of kind of into the history. And then after that, of course, what we have seen, the way that we have treated Ahmadis, for example, against Ahmadis, the kind of, we declared them as non-Muslim, and which is totally, totally against, I think, the Article 20 of our Constitution of Pakistan, which says that every citizen has a right to profess, to practice, even to propagate their religion, And here is the state of Pakistan which introduced and make it criminalized even for Ahmadis to, conduct any, like, for example, even their religion publicly and all that. So I think these are the. And of course, then everybody, I'm sure the people sitting in this hall, they know that then the Ziaul Haq take it to another level, where because of his project of Islamization, what he introduced, going back to, I think there was another thing which I wanted to, talk about, but I'll come to that later. But I think when you come to Ziaul Haq, the period when he tried to basically, I think he theocratized our state, He led towards that theocracy or blasphemy law, especially, I feel,
what the problem which we are all facing, not only non-Muslim Pakistanis, there are of course a lot more the non-Muslim, but even the Muslims, I think this is the blasphemy law that unleashed havoc and hell for the people, citizens of Pakistan, you know. And especially when he introduced these amendments, Article 225C and B, you know. Before that, we all know that blasphemy law was basically a penal code, you know, during the British time as well. And it clearly, you know, at that time, it was kind of a secular law. It says like, you know, if you're not supposed to, you know, hurt the feelings of, you know, any citizen belonging to whatever religion that person comes from. So it was not specifically for any, you know, for about any religion, and the maximum punishments, you know, prescribed at that time was 3 years, you know. But Ziaul Haq did, you know, with these amendments, then it it's kind of an Islamic kind of a law where only, you know, if you are disrespectful towards the Quran or towards, you know, Holy Prophet, then the punishment is death sentence and you know, life imprisonment. And I think that this whole dehumanization of our society, which started after, I think after 80s, the way the state basically, you know, the state has very actively kind of promoted the hatred, try to, you know, give this is a weapon they have given in the hands of people. And I think when today we talk about like rights of religious minorities, for me it is not an intellectual debate anymore, it's so emotional, you know. The kind of violation which is taking place against religious minorities, I think it's just killed our you know, very core of our own humanity. That's the one thing when you feel, I mean, what is happening around you? What have happened to the society? I think where Jinnah wanted to make this, build a nation state, I think the very fact today, these sort of the violation which we see all around us, I mean, Jadawala is a very recent case, but before that there was a Shantinagar, there was a Gojra incident, the kind of, you know, the killing which takes place, you know, the forced marriages of, you know, Hindu girls, we abducting them, forced marriages, so things like that. So I think that's where we feel that this is what is now basically creating the basis of where people are losing faith, you know, as a nation, you know, because that is the first time. Of course, human rights violation takes place everywhere else in the world as well, but that kind of a mob violence, that kind of, and the getting away with that, you know, when ye jo MPO ke saath hai, when you are digging their, you know, graves, and then they are not allowed to even have like on Eid, you know, Eid al-Azha, they were not able to do any, when people were like punished because they were slaughtering animals, you know, because this was the religious rituals they wanted to perform, you know. They are not able to see their names in the, you know, there is a separate list of electoral rolls, you know, and they are not willing to come to the, you know, to these polling stations because they know once they are identified, their lives are at risk. What kind of society we have become? And that's not what I'm saying. If this, the way the state is trying to build a nation as a modern nation state, I think the very fact, the way state is treating and kind of the laws, you know, I mean, look at the law. Non-Muslim can, you know, waive it. I mean, Quaid-e-Azam said once, you know, everybody will be equal in this one state. It does not resonate with the Constitution of Pakistan, you know, because the Constitution of Pakistan says that no non-Muslim can become a head of the state and things like that. So I can come back to some of the other aspects, but I'm sure you have other speakers, so let them have their say first and then. Thank you very much. This is very, very important topic. What cue I got from Dr. Farzana Bari is very important, that it is an emotional issue for us when it comes to safeguarding religious right. It is not a political question. It is also an emotional question. But look, how political question has an emotional, deep emotional dimension when we say Pakistan एक जज्बाती कौम है. Look at this. हमारे जज्बात गज़ा पे तो भड़कते हैं, कश्मीर पे भी भड़कते हैं,
किसी और मुल्क भी भड़कते हैं, अगर वहाँ से कुछ हमारे रिलेशन हो, स्टेट को एक्सेप्टेबल हो। लेकिन क्या जड़ेवाला वहाँ पे जो लोग बाहर खेतों में रात गुजार रहे थे, या जो है ना यहाँ पे मिसाल कोई हिंदू कम्युनिटी है हमारी, बड़ी रिच कम्युनिटीज़ हैं हमारी, क्या उन पे भी हमारे जज्बात भड़कते हैं उस तरह? ये सवाल है। लेकिन मुझे खुशी, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी 3 आर academics. I have 2 practitioners with me. So this panel is balanced. I'm requesting Pritam Das Sahib, that he's a representative of the Hindu community, that can he help us know what is his take on it? That is it about safeguarding religious rights in Jinnah's Pakistan? When it comes to temple or something like in religious right, in Islamabad, the state give them land to build their temple. Was this just an eyewash, or he's satisfied that minorities' rights are being taken care of in Pakistan, and he's happy with that as a practitioner? So, Pritam Das Sahib, can you please enlighten us on this? Thank you very much, sir. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक गाइडेंस दी थी, और जो आपने ज़िक्र किया बंगे साहब ने 11 अगस्त 1947 में, उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में इंक्लूसिव इम्पार्शल गवर्नमेंट रहेगी और मजहबी आज़ादी होगी, कानून की हुकूमत होगी, और सब पाकिस्तानी बराबर के हुकूक, सब पाकिस्तानियों को बराबर के हुकूक होंगे, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जिन्ना साहब जो है वो जल्दी वफ़ात पा गए, और उसके बाद में कोई हमें ऐसा लीडर नहीं मिला जो उनके विज़न को समझ सके और आगे चला सके। तो उसमें फिर जो है वो कई फ़र्क़े बन गए। कोई जो है वो ब्यूरोक्रेसी का जो है वो एक अलहदा क्लब बन गया, और फ्यूडल्स जो हैं उनका अपना एक अलहदा बन गया। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ मजहबी जमातों का जो है वो एक अलहदा ग्रुप बन गया। तो हर एक अपने रास्ते पे चलने लगा, हर एक ने इसको जो है वो अपने तरीके से उसको समझा और उसके ऊपर चले। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था उसके ऊपर कोई भी नहीं चला। उन्होंने अपने जो उनके अपने जो मुफादात थे वो उन मुफादात के ऊपर चलना शुरू हो गए, और इसीलिए कोई मतलब कंबाइंड सिस्टम नहीं बन सका, मुख्तलिफ ग्रुप बन गए, और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और उसके अलावा मतलब पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत की जो पौधा है वो फल फूल नहीं सका, क्योंकि 75 साल के अंदर कोई 25-30 साल जो है वो मार्शल की हुकूमत रही। मुख्तलिफ जो मार्शल डिक्टेटर जो थे, उन 4-5 डिक्टेटर थे, उनकी 25-30 साल हुकूमत रही।
तो उन्होंने फिर अपने तरीके से पाकिस्तान को चलाया। तो कोई एक राह, किसी ने भी एक राह जो है वो गामजन नहीं की, एक राह नहीं बताई जिसके ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों को यकमुश्त किया जाए और मुल्क के इंटरेस्ट को नंबर 1 रखा जाए और मुल्क को जो है वो आगे चलाया जाए और मुल्क को तरक्की दी जाए। इसके ऊपर जो है वो काम नहीं हो सका, क्योंकि ग्रुप बन गए, हर ग्रुप ने अपने इंटरेस्ट को देखा। इसके एक मैं आगे बोलता हूँ। If you allow me, I will ask you this later, प्रीतम साहब। जी, I will ask you, मैं बाद में पूछ लूँगा उसके बारे में, अगर आप मैं अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अक़लियतें हैं पाकिस्तान में, 96% मुस्लिम्स हैं और सिर्फ 4% जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। और उन 4% को जो है वो 96% मुस्लिम्स को उनका जो है वो ख्याल रखना चाहिए और उनके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात, उनके जो है वो मज़हबी आज़ादी उनको देनी चाहिए। और ये नफ़रत जो है, नफ़रतें नहीं फैलानी चाहिए। कुछ मज़हबी जमातें और कुछ सियासी जमातें जो हैं वो नफ़रतें फैलाती हैं, तो उस वजह से लोग जो है उनके पीछे लग जाते हैं और फिर वो नॉन मुस्लिम्स के साथ नफ़रतें करते हैं। उनके जो है मज़हबी जो मुकामात हैं उनको जो है जलाते हैं, उन लोगों से नफ़रत करते हैं, या जो है वो नाबालिग लड़कियों को जो है वो अगवा करते हैं, उनको फोर्स्ड कन्वर्शन करते हैं। ये इसको जो है वो सेफगार्ड करने का जो तरीका है वो मैं उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ कि उनकी मिनॉरिटीज़ को जो है, सारे मुस्लिम्स जो है ना 96%, उनको उनके ऊपर ये लाजम है कि वो अपने 4% नॉन मुस्लिम्स का जो है वो ख्याल रखे और मिनॉरिटीज़ के हुकूक की हिफाजत करनी चाहिए और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आज़ादी देनी चाहिए और सिंध में नाबालिग लड़कियों के अगवा और ज़बरदस्ती मज़हब तब्दीली को रोका जाए। पाकिस्तान की सेंसस रिपोर्ट 2023 जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किताब है, उसके मुताबिक 2022 में सिंध में 1000 हिंदू नाबालिग लड़कियों को उनका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील किया गया। और दूसरा ये है कि स्कूल और कॉलेज में मेरा ये जो है वो सजेशन है कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो है वो इंटरफेथ हार्मनी का चैप्टर डाला जाए ताकि वो बचपन में बच्चों के जहन में जो है वो ये आए कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो सारे एक हैं, अलग नहीं हैं, मुस्लिम हो या ना मुस्लिम हो। प्रीतम दास साहब, मैं काइंडली मैं अगर आपकी तरफ बाद में थोड़ा सा आ जाऊँ, ये महाम अली से एक सवाल पहले पूछ लूँ, अगर आप इजाज़त देते हैं तो। जी। अच्छा, थैंक यू। बिल्कुल, we just discussed now that we all are in some ways an emotional labor in the production cycle of the state. लेकिन जब इस तरह के forums की बात आ जाए, we usually try to understand the issue of religious freedom through political lens. What Pritam Das Sahib was saying and earlier, Dr. Farzana Bari was saying, the emotional factor, the emotional lens, the feelings,
जब आप किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, जैसे प्रीतम दास साहब ने हमें वो फिगर्स दी, तो पूरा एक फैमिली जो है आप उसकी लाइफ को ट्रेजिडी बनाते हैं। ये मुझे इसलिए फील हो रहा है कि मैं जब सुबह उठता हूँ एंड व्हेन आई सी इंटरनेट एंड ट्विटर एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन गाज़ा इन इज़राइल, बिलीव यू मी, माई होल डे स्पॉइल्ड. I don't know what should I do, what can I do. Yet I have all this negative energy around me. This negative energy is all around us in so many different ways, but we usually are looking into it through the political lens. What I'm just trying to interested to know through Maham Ali, because she's an activist, and she's moving around in the country working on religious freedom and all these minority rights, I would request her to give us an activist perspective, to use feelings as a lens, to enlighten us about some of the views which is coming directly from the people belonging to different minorities, the way Pritam Das Sahib was giving us in rational figures and facts. So can you please help us, Maham Ali? Thank you so much, Ji. Thank you. आई थिंक बहुत बातें इधर हो गई हैं जो मैं वही बातें कहूँगी जो डॉक्टर फरजाना ने भी कही। पहली बात तो ये आई थिंक हमारी जनरेशन जो है, जो स्पेशली मेरी जनरेशन जो है, वी हैव बीन ब्रॉट अप हियरिंग कि जना की विजन क्या थी। फॉर आवर जनरेशन आई थिंक हमें टू बी ऑनेस्ट उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग अभी जो हालात हैं हम उससे हम ज़्यादा हमें वाकिफ़ है कि जो हो रहा है। वी ऑलवेज बीन सीइंग दैट स्टेट इज़ वेरी रेडिकलाइज्ड। हमारी जो सोसाइटी है इट्स बिकमिंग एक्सट्रीमली रेडिकलाइज्ड। एक बात तो ये है कि जिना नेवर इन्विजन्ड एन एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, ही नेवर इन्विजन्ड अ स्टेट वेयर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। आई थिंक ये बात क्लियर है। बट हम डिबेट करते हैं जिना के विजन की, तो उससे मेरी जनरेशन को टू बी ऑनेस्ट हम थोड़े से उससे in a way we were a bit exhausted hearing about it and talking about that in very simple terms. दूसरा जो आपने जो बात की कि जहाँ तक बात है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, अगस्त में जब एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई जड़ावाला में जो हुआ, उधर मैं गई, मेरे को साथ फ्रेंड्स गए, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी हर्ड द क्रिश्चियन कम्युनिटी सेइंग कि वी वांट टू लीव पाकिस्तान। आई नेवर हर्ड दैट बिफोर टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि आई मेट दिस एल्डरली वुमन हु सेड कि मैंने ज़िंदगी इधर गुजारी है लेकिन अब मैं छोड़ के जा रही हूँ पाकिस्तान। तो इस तरह के सेंटिमेंट्स जो है एटलीस्ट इन माई लाइफ मैंने सुने नहीं। जब मैं बात करती हूँ जुनैद हफीज़ के वालिद साहब से, जब मैं बात करती हूँ आसिया बीबी की फैमिली से, उनको बिल्कुल एक लगाव है पाकिस्तान के साथ। दे स्टिल काइंड ऑफ ऑब्वियसली लव देयर कंट्री, बट अब आई थिंक इतनी रेडिकलाइज चीज़ें हो गई हैं, इतना ज़्यादा स्टेट रेडिकलाइज्ड हो गया है, एंड इट गोज़ फॉर ऑल। अगर हम लोग आज के ज़माने में बात करें, हमारी जितनी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, दे हैव सैडली ऑलवेज बाउट टू द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन द कंट्री। जो हम लोग ज़ियाउल हक के बारे में बिल्कुल बात करते हैं, हम लोग मुशर्रफ के बारे में कम बात करते, बिकॉज उनकी एनलाइटन मॉडरेशन एक थी। सो इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स एंड फॉर ईयर्स। अभी ये है कि मैं थोड़ा बहुत जो काम जो करती हूँ, फंड रेजिंग फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी स्पेशली हु बीन अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, over the years, उसको ना हम उसके बारे में बात कर सकते। आई थिंक दिस इज मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ओपनली बात कर रही हूँ, बिकॉज हम लोग वी कांट इवन टॉक अबाउट इट कि हम लोग इसके बारे में हम लोग इनको कर रहे हैं। जो हुआ, जो मशाल खान के साथ जो हुआ, और मैंने हमेशा मैंने जब भी हुआ तो मैंने कहा था मशाल खान के साथ जो हुआ, इट वॉजंट द वर्क ऑफ अनएजुकेटेड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टेट कॉन्स्टेंटली पेट्रोनाइजेस, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टेट पिक्स अप सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिवोलियस चार्जेस। उनके जो मशाल खान के साथ हुआ वो एक कोई अनकंट्रोल्ड मॉब फ्यूरी नहीं थी, वो एक बहुत प्रोसेस एक पूरा उन्होंने, बिकॉज वी यूज रिलीजन एज अ टूल टू persecute people. Blasphemy law जो है that is sadly used as a tool to persecute people, और कब से ये हो रहा है, not only for non-Muslims, even for Muslims as well. अभी मुझे I think 90s की बात शायद है कि एक यंग हाफिज़ कुरान था who was accused of blasphemy, और वो क्यों हुआ था, because his neighbor thought that he was having an affair with his wife, उन्होंने उनको फिर अक्यूज़ कर दिया ब्लास्फेमी। सो ये कब से हो रहा है, और बिकॉज मेरा ताल्लुक थोड़ा बहुत एजुकेशन सेक्टर में है, जब देखती हूँ व्हेन आई मीट चिल्ड्रन, व्हेन आई मीट टीचर्स, मुझे तो बहुत डर लगता है। आई थिंक हमारी एज अ सोसाइटी हम लोग रिग्रेस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम रेडिकलाइज हो रहे हैं, एंड अगर थोड़ा बहुत अगर हम लोग एंड वी आर वर्किंग ऑन सच स्टफ एज वेल, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, पहले हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं
उनको आप ना पढ़ाएं, अगर आप टेक्स्ट बुक्स आप खोलें, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ क्रिश्चियंस ये हैं, हिंदूज़ ये हैं. So it starts from a very early age, and that is अभी जो outcome जो है वो हम years of radicalization को देख रहे हैं, and sadly I think we as a society are constantly regressing. Again जो जड़ावाला में जो हुआ, गोचड़ा में जो हुआ, आपने जिक्र किया कि इधर टेम्पल भी बना सकते हैं. So जिना का विजन तो बहुत दूर की बात है. I think हमारा अपना विजन भी जो I think स्टेट का विजन to be honest यही अब है, because जो हो रहा है. So yeah, I think we are just regressing. Thank you very much. Thank you, Maham. फिर बात जिना साहब के विज़न पे आती है. मेरे पास उसमें 2-3 मिनट्स हैं. मैंने अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुख्तसरन अगर इसका जवाब दे, फिर हम आपकी तरफ आएंगे. विल जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस, लाइक उसको भी कोशिश करेंगे. फिर जिसको पुट कर रहे हैं क्वेश्चन, उसका नाम काइंडली फिर आप लेंगे. तो वंस अगेन कमिंग बैक टू यू डॉक्टर याकूब साहब के, ever since Pakistan came into being, and we are reading, we are hearing all these kind of things, कि पाकिस्तान में अगर कोई इशू है तो फिर कहेंगे कि इसका हल इस्लाम है. और अगर आप फिर पूछें कि इस्लाम मतलब क्या, वो कह रहे हैं बस इस्लाम परफेक्ट है और इसके आगे कोई बात नहीं है. तो जिना के हवाले से भी अगर आप देखें तो जितनी कम्प्लेक्सिटी इस मुल्क में रिलीजन के हवाले से है, हकूक़ की बात जब आए, तो जिना को भी जब पूछा जाता था मुख्तलिफ इवेंट्स में, और आज हिस्टोरियंस लिखते हैं, तो वो अक्सर जवाब देता था कि एक दफ़ा पाकिस्तान बन जाने दो, फिर बाद में देखेंगे कि इसका क्या. तो जिस तरह हम रिलीजन के मामले पे एक तरह से कन्फ्यूज्ड हैं, मैं क्यों लफ्ज़ कन्फ्यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इशू सिर्फ माइनॉरिटीज़ का नहीं है पाकिस्तान में, इट्स लार्जर दैन दैट. और अगर मैं कहूँ कि मेजॉरिटी का हाल अगर आप देखें तो लोग मस्जिद तो नहीं जा रहे हैं बहुत सी जगहों पे. मिसाल मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दूँ, कितने ब्लास्ट मस्जिदों में हुए हैं. ये तो बड़ा आसान है कि कहीं पे किसी पे कुरान की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाओ, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाओ, भले उसका कोई भी इशू हो, और उसको पकड़ो, उसको मार डालो. लेकिन जिनके हाथों में गन्स हैं और वो हमारे मस्जिदों में फट रहे हैं, क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है? उन मस्जिदों में सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ कुरान भी पढ़े होते हैं. मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, मैंने कुरानों का हशर जो देखा है इन फटने वालों के हाथों, और ये मेजॉरिटी से बिलोंग करते हैं और ये समझते हैं कि हमसे बेहतर लोग हैं ये मजहबी, और हमारे रियासत के लोग भी समझते हैं कि हमसे वो लॉयल हैं पाकिस्तान के लिए. कहा है, कई दफ़ा कहा है, ऑफ द रिकॉर्ड हर वक्त कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी कई दफ़ा कहा है. तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह जिना साहब जिस तरह इस्लाम के मामले पर आज न मेजॉरिटी महफूज है और न माइनॉरिटी महफूज है, इसी तरह जिना साहब को जो विजन है कि पाकिस्तान के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो आया ये ठीक फैसला था, ठीक सोच है, कोई डायरेक्शनलेस है, इसी तरह रहेगा या कुछ तरक्की हो जाएगी आगे? Well, that's the $1 million question really. मैं just 2-3 बातें जल्दी से बयान करूं. एक तो यह है कि मेरे ख्याल में we have to be very careful कि दुनिया में whenever there is a founder of the country, it is not necessary that their vision should and has to be followed. You look at India, you know, if it were up to Gandhi, all of India would have been a village. You know, of course, Nehru broke with that very quickly. You look at the US, a lot of the founding fathers of the US owned slaves, hundreds of slaves, you know. So, aaj US mein slavery nahi hai. So, you know, you move on, right? The problem is this, that we are stuck with Jinnah to a large extent to what you were actually saying earlier, that we are actually confused about the role of religion. Now, Jinnah, we have to admit, used religion in a very political manner without really understanding its implications. He did not understand it, in my opinion, because he was a lawyer. He wanted to win the case of Pakistan, which he did. And he did not understand the future of it. मैं आपकी एक छोटी सी इस पे example दूँ कि when Jinnah said in 1940 that Hindus and Muslims are completely different, you know, I always teach my kids, use that speech and then compare it to 1971. So they get very confused and say, what about 1971? And I said, everyone in Pakistan has read this story of Rashid Minhas, right? Now, Rashid Minhas downed a plane. Pakistan gave Rashid Minhas its highest award, and Bangladesh
gave that instructor that Rashid Manas downed its highest award. Both countries are Muslim majority countries, and both of them were Muslim. Another very interesting thing, the first Paramveer Chakra, which is the highest Indian award, given in the 1965 war, was to a Muslim. So there was this complication of religion that Jinnah did not really understand and appreciate, one. Secondly, we need to also look at, and again, I'll point out two other Muslim leaders that we need to really look at. One is Maulana Abul Kalam Azad, who warned Pakistan, and if you read his autobiography, especially the last bit that was released after his death, that really says that if you instrumentalize and make politics out of religion, it will come back and haunt you. And exactly as you were saying, it will come and destroy the majority religion also. There are more people today in jail from the Muslim community on blasphemy charges than they are of any other religion. So Muslims use it against Christians, Hindus, and other Muslims. The other person that I really want to just quickly mention is, you look at Bacha Khan, his views. What was the idea about? You need to change society. And that's one of the great gaps, and I really want to emphasize that, and Maham actually pointed this out. We need to talk about the society we are in. I was in Jadawala, I actually wrote the HRCP report on Jadawala, and the first thing the SSP police said there, कि जी बाकी सब कुछ छोड़ें, the main point is people here hate Christians. They were waiting for an opportunity to attack them. If it didn't happen today, it'll happen somewhere else. We need to really talk about the root causes of the great extremism that has permeated our society to such an extent that anyone who is the other, anyone who's not exactly like them is hated. That has now become the ground reality of Pakistan. That is something that we have to look at. If Jinnah didn't look at it, fine. People make mistakes, but we have to look at it. Thank you, Dr. Bangash. Thank you very much. Dr. Farzana Bari, quickly, what is your take on it? Is there any takeaway from the situation which we are facing here? Can we go somewhere else from here, or do you think? इस वक्त जो स्टेट ऑफ लाइक हम रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के हवाले से जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे optimistic, क्योंकि society by and large has become very dehumanized. You can't imagine, how people, come together in a mob and start killing and lynching, other human beings. How that is going to change, I think that, that is something I have to think, maybe it's a very long-term thing now to do. But immediately what I feel that at least what is the responsibility of the state which has created this kind of a mindset, which is a very monstrous mindset, तो क्या होना चाहिए? तो मुझे तो लगता है कि unless like Bangladesh has declared their state as a secular state, मुझे लगता है कि it's very very important in the context of Pakistan कि हम state और religion जो है, religion और politics जो है, इसको हम अलग करें. The state should not have any religion. Secular state का जब हम कहते हैं इसको जो जिस तरह से when we say the secular Pakistani state should be a secular state, तो people often say आप लादीनियत की बात करें. But in my view, when the state is secular, it is not लादीनियत, it is हमादीनियत. State का religion नहीं होता. The people who are living, the citizens have, different religion. Or if the state is secular, that means कि वो हमादीनियत के ऊपर मबनी होगी और वो तमाम citizen के जो religious rights हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उसका वो तहफ़्फ़ुज़ करेगी. Number one. Number two, I feel we are short of time. Yeah, I'm sorry sure, for that. okay. I'm sorry for yeah, that. that's all right. Pritam Das Sahib, coming back to you, as I promised, if you want to say something regarding the takeaway, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, मिसाल यहाँ पर क्या आप मुतमईन हैं जो स्टेट का जो रिलेशनशिप है हिंदू कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि यहाँ स्टेट पे बातें हो रही हैं, तो मैंने पहले भी इशारा किया कि यहाँ पे इस्लामाबाद में तकरीबन 3000 क्लेम है कि हिंदू यहाँ पे रहते हैं इस सिटी में. तो उनके लिए चूँकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो प्रैक्टिसिंग या वर्शिप के जो राइट्स हैं वो सारे उनके लिए वो फैसिलिटीज़ हैं, या वो उनकी इश्यूज़ को कैसे देखते हैं आप? और मुख्तसर काइंडली, मेरे पास 2-3 मिनट हैं प्लीज़. इस्लामाबाद में जो है वो कोई 4-1 हज़ार होगा पॉपुलेशन, मर्द औरत बच्चे वगैरह. तो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है वो कोई मंदिर नहीं है जो मजहबी रस्में अदा करने के लिए, और न क्रीमेशन ग्राउंड है
जो हम आदमी की डेथ के बाद हम क्रीमेट करते हैं, जलाते हैं, वो भी नहीं है। उसके लिए हमने कोशिश की थी इस्लामाबाद में, तो वो CDA ने हमें 4 कनाल का प्लाट दिया है H92 में। अब उस प्लाट तो दिया है और उसकी बाउंड्री वाल भी बनी है, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वो हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हमने अप्रोच किया था थ्रू MNAs, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अप्रोच किया था। इमरान खान ने 10 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किए थे, लेकिन उसके ऊपर जो है वो मजहबी हजरात और सियासी हजरात उन्होंने एतराज़ किया कि नहीं, सरकारी पैसे से ये नहीं होना चाहिए। तो वो फिर उन्होंने इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल को रेफ़र किया, और इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल ने जो है अपना डिसीजन दिया कि इस जगह पे जो है वो कम्युनिटी सेंटर और क्रीमेशन ग्राउंड बनाया जाए, और सईदपुर में जो मंदिर है और उसके साथ धर्मशाला है, उन दोनों को मिला के उन्होंने लिखा था मिनिस्ट्री रिलीजियस अफेयर्स इंटरफेथ हार्मनी को, कि वो सईदपुर में जो मंदिर है उसके साथ धर्मशाला है, उन दोनों को मिला के इनको हिंदुओं को जो है वो मंदिर बना के दिया जाए। और तीसरा जो है वो उन्होंने ये कहा था कि इनको मिनिस्ट्री जो है वो सफिशेंट फंड दे, जो अपने ये जो ज़रूरी अखराजात हैं वो उससे वो चलाएं। तो उसके ऊपर जो है वो मिनिस्ट्री ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। उसको कोई 1.5-2 साल हो गए होंगे, अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ है। न सईदपुर में वो मंदिर बना है, न यहाँ कम्युनिटी सेंटर या क्रीमेशन ग्राउंड बना है, और कुछ भी नहीं बना है। Thank you, दास साहब, for enlightening us on this issue. हमारी ख्वाहिश है कि और उम्मीद है कि जिस तरह आप लोगों की स्ट्रगल है, स्टेट उस पर रिस्पॉन्स उसी तरह करे जिस तरह इनिशियली किया था। ये चीज़ें बाद में बहुत फंस गई। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की स्ट्रगल रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें इस तरह रहेंगी। मैं आखिरी सवाल की तरफ माहम अली की तरफ आऊँगा। मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि आप यंग उसको रिप्रेजेंट करती हैं, मुल्क में पूरा आप लोगों का एक नेटवर्क है, तो कौन कौन से मुख्तसरन अगर आप हमें बताएं कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर रही हैं इस वक्त, जो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से है या उसके सेफ गार्ड्स के हवाले से है? थैंक यू जी। जी हमारा आई वर्क इन अ पर्सनल कैपेसिटी विद अ कपल ऑफ अदर पीपल। हमारा कोई इदारा उस तरह नहीं है, और हम लोग ज़्यादा फंड रेजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जड़ावाला में जो हुआ, उनको बेसिक चीज़ें चाहिए थी, फ्रॉम बेड टू पॉट्स एंड पैन। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग फंड रेजिंग हम लोग उस लिहाज से करते हैं। If I ask, sorry for interference, if I ask कि हम जैसे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं इस तरह की उसमें, जो आप जैसे दोस्त कर रहे हैं काम, हमारी ख्वाहिश होती है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ से सिरा पकड़ें, तो क्या कोई ऐसा कोई जादू का वो है कि हम पार्टिसिपेट कर सकें? जादू को होता नहीं बेसिकली जी, लाइक आई सेड कि हम लोग जब जड़ावाला जब गए, हमने बिकॉज हमें अंदाज़ा नहीं था कि उधर एग्जैक्टली हुआ क्या, एंड वी वर हॉरिफाइड बाय व्हाट वी सॉ। सो हमने खुद ही वी मेड कनेक्शन विद द लोकल कम्युनिटी, हमने उधर किया। तो आई थिंक फंड रेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट वी डू, एंड पीपल कैन सपोर्ट देम एज वेल। दूसरा, हमारे जो पॉलिसी लेवल के ऊपर जो एडवोकेसी जो हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग। और दूसरा वेरी वेरी ब्रीफली जो हमने कहा, आई वर्क विद चिल्ड्रन क्वाइट डिबेट, इफ यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम, रियली वांट टू सेफगार्ड, देन चेंज द करिकुलम ऑफ दिस कंट्री बेसिकली। आई थिंक बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उसमें रेडिकलाइजेशन है बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये 2-3 टेक अवेज जो हैं, और आप सपोर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, पर्सनली कैपेसिटी में, आप वो तो। Thank you very much. Thank you. Before coming to the audience, I want to say, when I was listening to Dr. Yaqub and others, I was just thinking that
when, and using negative word, quote unquote, Jinnah used religion to make a country, Pakistan. मैं ये सोचता हूँ कि हम क्या बनाने जा रहे हैं. मुल्क तो बन गया मज़हब के इस्तेमाल से, और अगर जिन्ना का विजन ये था कि पाकिस्तान बन जाएगा तो शायद उसका ये मतलब हो कि लोग खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे कि उन्होंने इंसानों की तरह कैसे रहना है. मेरे ख्याल में, आई मे बी रॉन्ग, मैं इधर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन वैसे थोड़ा सा मेरे जहन में आपसे शेयर करूँ तो इसी के साथ हम आगे बढ़ाते हैं और 10-15 मिनट हम हॉल को ओपन करते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ काइंडली आप एक तो माइक अगर कहीं हो तो उनको दें, नाम प्लीज़ लें और मुख्तसर, बहुत मुख्तसर रखें, टाइम नहीं है हमारे पास. ये तो तुम सारा यहाँ पे लोग प्रोपेगेंडा करने बैठ गए हो और बकवास कर रहे हो बैठ के उल्टे सीधे. मैं डॉक्टर सईद मेरा नाम है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जहाँ से आई हुई है ये, ठीक है, मुझे पता है ये क्या करती रही है वहाँ. हाँ हाँ हाँ. ये जो है पहली बात तो ये कि कायद-ए-आज़म के बारे में इस तरह के तुम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो लोग. वो जिन्ना कायद-ए-आज़म को जिन्ना, ये जो कह रहा है कि जी क्लियर नहीं था विजन, क्यों नहीं क्लियर था? वो अब भी क्लियर हो गया जो कुछ पाकिस्तान मुसलमानों के साथ कर रहे हैं. ठीक है, आपका सवाल प्लीज. मैं सवाल नहीं, मैं कमेंट दे रहा हूं. नहीं, मैं आपको कमेंट के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने सवाल, प्लीज. ठीक है, मैं सवाल में तुम लोगों से मेरा सवाल क्या होना है? प्रोपेगेंडे कर रहे हो बैठ के, झूठे बकवास कर रहे हो तुम दोनों, और ये भी औरत भी. अच्छा. इसकी तो मैं बताता हूँ, फौज के खिलाफ इसने जो है वो नारे बनाए हुए. अच्छा, ये जो है ना बाद में है, इसके पीछे वर्दी है, इसने बनाया है. हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको. ये जो फोरम बातें हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. नहीं, आप This is the mindset. This is not what. Actually, this is exactly the mindset, you know, which is attacking the people. This is exactly the mindset. उसके पीछे वजारत दाखिला ने भी कहा है कि इंडिया के साथ लिंक्स इसके मिल रहे हैं. आपका सवाल आ गया, प्लीज दे देंगे. सारे जो Actually, we do not want to hear you. We don't want to. This is not the way to talk. समझ आए कि नहीं? और ये जो चमचे बाहर से उठ के आ जाते हैं बकवास करने के लिए इस तरह के. Take him out. नहीं. Take him out. Please. Cannot. ठीक है. That's okay. नहीं. Please. अस्सलाम वालेकुम. प्लीज अगला सवाल. अच्छा, नाम भी बताएं जिससे आपने सवाल पूछना है ना, और सिर्फ सवाल, कमेंट्स की कोई इजाजत नहीं है, प्लीज. कमेंट्स हो चुके. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अली है. मेरा क्वेश्चन है, करिकुलम में हम पढ़ाते हैं गाजी इल्मुद्दीन को ग्लोरीफाई करके पढ़ाते हैं. जब स्टूडेंट वो पढ़ेंगे तो उससे क्या मशाल खान जैसे वाक़या. आपका सवाल किससे है? पैनल से है, पूरे से. अच्छा, तो इससे क्या मशाल खान जैसे वाक़यात नहीं होंगे? और दूसरे ये कि मतलब कायद-ए-आज़म तो खुद कंफ्यूज था, तो मतलब जो वो होता है. प्लीज बात सुने यार. आपको जो मुझे आपकी इसलिए फिक्र है, आप सवाल तो कर रहे हैं कि जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे इसी माइंडसेट से लोगों की जानों को खतरा भी होता है. तो प्लीज अच्छा, ठीक है, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, बात करने में कोई हर्ज नहीं है. प्लीज इसको ले जाएं, ये प्लीज. यार प्लीज, मैं आपकी बात बिल्कुल आ गई, प्लीज इसको ले जाएं यार जी. अच्छा प्लीज, हाँ ऐसा करें, सवाल आप सवाल करें, प्लीज गो अहेड, आप सवाल करें. आपका सवाल आ गया? अच्छा प्लीज गो अहेड, आप करें. अच्छा, माइक जरा दे दें, माइक काइंडली. इसके बाद आपके पास आते हैं, मैडम आपके पास आते हैं. अच्छा जी, माय नेम इज साद अशरफ. आई एम रिटायर्ड सेक्रेटरी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. आई रिटायर्ड 25 years ago. That's why you never heard my name. The thing is that, you know, in fact, Quaid-e-Azam Jinnah was not in favor of dividing the country. This is a fact. Go back to your history books, and in 1946, a cabinet mission was sent to India at that time, and it sort of consulted all the Hindus and Muslims leadership to find out how we can divide this country.
it is then that they presented the cabinet mission plan. The cabinet mission plan by the British was to divide India into 3 regions in a sort of a confederation, with the capital at Delhi and common currency and perhaps also common defense forces. That I don't know. So in fact, Jinnah supported that, and it was the Congress which rejected that. You see? We agree with you, but please One minute. If that had happened, that was real Jinnah's Pakistan. If that had happened, there wouldn't have been any riots, community riots or anything. And you know, we would have had peace and compatibility on the 3 regions. Thank you very much. Yeah, so this is a comment, not a question. No, this is the question. Okay, thank you very much. The question is this true? What I'm saying, is it true or not? Okay, I think, thank you. Yeah, Madam को दे दें वो Madam. जी अस्सलाम वालेकुम। आप लिख रहे हैं या नहीं? मैं जी उस्ताद रही हूँ स्कूलों में, मेरा नाम फ़रा अली है। मुझे ये कहना है कि जो बहुत बड़ा मसला है वो यही है जो आपने निशानदही की कि आप स्कूलों से शुरू करेंगे और आप मस्जिदों से शुरू करेंगे अगर आपने सोच बदलनी है। मुझे 2-3 सिर्फ बताने कि जब हम कोई नारा देते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, वो नारा कहाँ से आता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पता चला है कि ये तो नारा ही गलत है, इसलिए कि इस नारे का मतलब ये हुआ कि हम जब इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आएंगे तो हमें प्लॉटों की तकसीम के साथ साथ कोई नया खुदा भी मिलेगा। अल्लाह तो वहाँ पे भी वही था और यहाँ पे भी वही है। तो पहली ये बात हो गई। अच्छा, फिर आपने झंडा बनाया, झंडे पे आपने जो सारी दुनिया में अमन का निशान होता है, सफ़ेद निशान, आपने उसको लाइन खींची, माइनॉरिटीज़ का निशान बना दिया। मुझे पूछना है वो झंडा कायदे आज़म ने बनाया था क्या? सबज़ रंग में हर पाकिस्तानी जम क्यों नहीं है? हमने झंडे पे लाइन क्यों खींची? हमने क्यों कहा कि माइनॉरिटीज़ का निशान जो है वो सफ़ेद रंग है? गलत हो गया यहाँ से। तीसरी कमाल हमने बात की, बेचारे कायदे आज़म ने नारा लगाया यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। चूँकि हम मौलवी जहन के लोग हैं तो हमने फेथ का छोटा सा मतलब लिया, बिल्कुल नैरो टनल विजन के साथ। फेथ का मतलब इस्लाम का रिचुअल नहीं है। हमने किया कि आप जहाँ मर्जी देख लें, पहले लिखो फेथ यूनिटी डिसिप्लिन, बिकॉज इस्लाम को ख़तरा हो गया यूनिटी ऊपर जाने से। जबकि अगर आप बच्चों को जमातों में पढ़ाएंगे तो आप उनको बताएं कि यूनिटी के बग़ैर फेथ मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये कहना है जहाँ पे जो उस्ताद हैं, जहाँ पे बच्चे हैं, कि खुदा के वास्ते अपने स्कूलों पे ध्यान दीजिए। सिंगल नेशनल करिकुलम और बाकी कहानियों से निकलिए। और मेरा ख्याल है मेरा सवाल कोई नहीं है, ये मैं सिर्फ वेंट कर रही थी। थैंक यू वेरी मच मैडम। चलिए ये फाइनल कमेंट है प्लीज़। इसके बाद हम देखते हैं, हम ये सवाल ले लेते हैं, अगर कोई टाइम बचा और ऑर्गेनाइजर ने इजाज़त दी तो वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज कुछ पैनलिस्ट हैं वो जाना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी काम है उनके। प्लीज़ 8 बज गए, एक लास्ट सवाल प्लीज़ जी। किसको दे दें? इस साइड पे, हाँ इस साइड पे अभी एक सवाल भी नहीं हुआ। जी question. First of all, I would like to apologize on behalf of the Muslims because that's not the way how Muslims should be. Secondly, my question is कि अगर जिन्ना का विजन था इस्लाम लाओ, उन्होंने मुल्क बना दिया, अगर हम इस confusion में हैं तो what's the way forward now? Because that has passed 75 years ago. तो अभी हमने क्या करना है? The second thing, the last question is कि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जबकि जो इस्लामी निज़ाम है वो जमहूरियत के ऊपर नहीं है, वो तो शरिया की बेस के ऊपर स्टेट के बनती हैं। तो हमारा तो नाम ही गलत हो गया। तो हम इस चीज़ को किस तरह आगे कन्वे करेंगे आने वाली जनरेशन को कि इफ़ वी आर टीचिंग द इस्लाम, देन व्हाट्स द डेमोक्रेसी वी आर टीचिंग इन आवर कंट्री? दैट्स द माय क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ये जो है ना, हम अगर इस सेशन को वो कर लें, हमारे जिन पैनलिस्ट ने जाना होगा वो फिर, और अगर हमें ऑर्गेनाइज़र इजाज़त देते हैं तो हम कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे जो टाइम दिया गया है उसमें यही सवाल हो सकते हैं। हमें पहला, हाँ पहले जो डॉक्टर फरजाना बारी साहब। ब्रीफली देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि कायदे आज़म ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया है 1 साल पहले तो कायदे आज़म ने तो एक्सेप्ट कर लिया था ना। तो और ये सफ़ेद, आपने जो बात की कि सफ़ेद रंग क्यों डाला उन्होंने,
क्योंकि बेसिकली ये जो पाकिस्तान की सारी तहरीक थी, ये जो मुसलमान मिनॉरिटीज़ के में थे, और देखें पाकिस्तान की तहरीक उन इलाकों से नहीं उठी जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में थे, जैसे KP में खान साहब की वो थी, वो उन इलाकों से ये तहरीक उठी थी जहाँ पे जैसे UP-CP वगैरह, जहाँ पे मुसलमान मिनॉरिटी में थे। और कायदे आज़म ने जब ज़ाहिर है कि फिर ये पाकिस्तान जिस इलाके में मुसलमान थे, जिस तरह मैंने पहले बात की थी, वहाँ बहुत डाइवर्सिटी थी एथनिकली एंड ऑल दैट, तो उनको कैसे इकट्ठा किया जाए, तो दैट्स वाई ही स्टार्टेड यूजिंग दिस कि अच्छा मज़हब की बुनियाद पर उसको उसने एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे। लेकिन क्योंकि वो इतने अवेयर थे कि जो मिनॉरिटी राइट्स हैं, इसीलिए उन्होंने पर्टिकुलरली इसके ऊपर बात की। जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो पहली पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, वो ये रिलीजियस मिनॉरिटी के राइट्स पे उन्होंने कमेटी बनाई थी। तो कहने का वो है कि मतलब मकसद ये है कि इस वजह से कि यहाँ पे रहने वाले, क्योंकि हमने मुसलमान जो एक हिंदू इंडिया जहाँ की वहाँ मेजॉरिटी में जो उनको एक खौफ था कि वो उसमें जम हो जाएंगे और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, कायदे आज़म वाज वेरी अवेयर कि शायद यहाँ पे जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी वो राइट्स ना मिलें, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर रहा है। अच्छा, ये वे फॉरवर्ड, एक स्टूडेंट ने पूछा वे फॉरवर्ड क्या है आप मेरे ख्याल में? वे फॉरवर्ड में देखिए, मुझे तो जिस तरह मैंने कहा कि सोसाइटी में तो ये मैं फिर उनकी तरफ खुल के इशारा करूंगी क्योंकि मैं एक्टिविस्ट भी हूँ। इस माइंडसेट को जो हमने 75 सालों में क्रिएट किया है, ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन का आपको अपना करिकुलम बदलना पड़ेगा। अभी भी आप देखें कि सिंगल नेशनल करिकुलम में किस किस्म के बायसेस रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको अपने कानून को बदलना पड़ेगा। ज़ाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कहता है कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनेगा, तो आप खुद सोचें कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी दे आर नॉट इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप उनको वो आप आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलें। ब्लास्फेमी लॉ एक वेपन है जो लोगों को, जिसमें मतलब लोगों को जो है दिन रात मैं समझती हूँ उसके अंदर जो मॉब वायलेंस की जो सारी ये मेंटेलिटी है, उसको यहाँ का जो एक रेडिकलाइज मतलब एक बिगेटेड माइंडसेट है वो उसको यूज़ करता है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। सो मैं समझती हूँ कि रियासती सतह पे हमें ये वाले इश्यूज़ हैं, इसके अराउंड हमें मोबिलाइजेशन करनी चाहिए, एडवोकेसी करनी चाहिए। बाकी ये है कि ये माइंडसेट जो हमने क्रिएट किया है, which is taking away your and my humanity every day. You know, it hits the core of our humanity when we see what happens in Shantinagar, when we see what happens in Jarawala, when we see what happens to, Mashal, and I can't mention so many. This is taking away your and my humanity. The society is becoming dehumanized, तो हमें मिलके स्टार्ट कहाँ से करना है? Let's टेक कंट्रोल ऑफ दिस स्टेट। जब तक स्टेट की नेचर पे ये वाला जो इस वक्त रूलिंग एलीट है वो रियासत के ऊपर कब्जागिरी करके बैठी रहेगी, ये माइंडसेट नहीं बदलेगा। उसमें आप और हम पाकिस्तान की मेहनत का शवाम जब तक रियासत के ऊपर अपनी अमलदारी नहीं कायम करेंगे, तब तक मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के अंदर हम वो पॉलिसीज़ नहीं ला पाएंगे जो प्रो पीपल हों, प्रो ह्यूमन हों, और जिसके अंदर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बारी, थैंक यू। डॉक्टर बंगश की तरफ मैं जाता हूँ। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लामी एंड जमहूरिया का क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? ये अच्छा भाई साहब, अच्छा आप आए जाए, इसको ले जाए। आप बात करें जी। जो मेरा जिसम आपकी मर्जी तो नहीं हो सकता, कोई खिलाफ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये हमारा मुल्क है, हम हर चीज़ पे बात कर सकते हैं। आप खैर जवाब दे दें, कोई बात। अच्छा जी, जो आपने सवाल पूछा वो तो दैट्स अ लॉन्ग डिबेट, बट इट कुड आल्सो जस्ट मीन अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, मतलब इट डजंट हैव टू बी एनीथिंग बियॉन्ड दैट। और जो सर आपने बात की कि वो कैबिनेट मिशन का, आई शुड से कि ये कैबिनेट मिशन का बिल्कुल ठीक आइडिया था। एंड अगेन मैं तो एक लाइन मेरे ख्याल में एंड में कहूँगा, विच आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि हमने 75 साल में इस मुल्क की जो हालत की है, मे बी जिना वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इन दिस पाकिस्तान।
So I think we need to remember that as the last word. And again, it is upon us to change the country and make it better. अगर औरों पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, इधर-उधर की बातें करते रहेंगे, तो we will not change ourselves and become better citizens of the country. So as long as we have equality in the country, as long as we have equal opportunity, तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा. और जिन्ना साहब भी अगर आज जिंदा होते, तो मेरे ख्याल में बहुत शायद उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता आज. And I think that's a very important point. Thank you very much, panel. मैं सिर्फ एंड इस पे करूँगा कि जो मेरे पैनलिस्ट ने कहा बड़ी अच्छी बात की. यही वजह है जो एक दोस्त ने भी पूछा कन्फ्यूजन का कि 200 मुल्क दुनिया के एक तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान दूसरी तरफ जा रहा है या उसके कुछ लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दिस एनलाइटेंड डिस्कशन. नाउ आई फिनिश दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.